Hello students, in this video we are going to learn about revenue expenditure and capital expenditure. So here we have a question, and in this question we have to categorize whether the following expenditure are of revenue nature or are they of capital nature. So before starting the question, let us understand that what is the meaning of revenue expenditure and what is the meaning of capital expenditure. So students, any expenditure which is done by the government and which neither creates any asset or reduces any liability of the government is treated as revenue expenditure. Whereas any expenditure which either creates asset or reduces liability for the government is treated as capital expenditure. So students, we have to understand this that revenue expenditure is basically of recurring nature. Recurring nature means आपको क्या करना पड़ता है, उस expenditure को repeat करना पड़ता है. Whereas capital expenditure क्या होता है, it is basically one time transaction जो government को बार बार नहीं करनी पड़ती. So जब भी आपको identify करना है that whether the expenditure is of revenue nature or of capital nature, तो आपको हमेशा यही चीज याद रखनी है, that is first thing कि वो रेकरिंग नेचर का है या फिर रेकरिंग नेचर का नहीं है. द सेकंड पॉइंट इज क्या उसको एक्सपेंडिचर करने से क्या हमारे कोई एसेट क्रिएट हो रहा है या फिर हमारी कोई लाइबिलिटी रिड्यूस तो नहीं हो रही है. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज गिविंग रीजंस कैटेगराइज द फॉलोइंग इनटू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड capital expenditure. The first one is your subsidies, the second one is your grants given to state governments, the third one is repayment of loans, and the fourth one is construction of school buildings. The first one is your subsidies. So, subsidies is a revenue expenditure. Why it is a revenue expenditure? Because the first point is it is recurring in nature. ये क्या है? Recurring nature की होती है. Government को ये one time दे के भूलने वाली चीज नहीं है. Government को क्या करना पड़ता है? इसको हमेशा देना पड़ता है subsidy. So that's why subsidy is of revenue expenditure. एंड बाय गिविंग दैट सब्सिडी गवर्नमेंट का ना ही कोई एसेट क्या हो रहा है क्रिएट हो रहा है और ना ही कोई लाइबिलिटी क्या हो रही है रिड्यूस हो रही है. सो दैट्स व्हाई सब्सिडी क्या हो जाएगी एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगी. If I talk about the grants which are given by the government to the state government, in that case, these grants will be also treated as your revenue expenditure. Why? Because they are also recurring in nature. And by giving these grants, government का ना ही कोई asset create हो रहा है and ना ही कोई liability reduce हो रही है. So that's why जो भी grants government देती है to the state government, that is also treated as your revenue expenditure. If I talk about repayments of loan, दैट मीन्स गवर्नमेंट ने कोई लोन लिया था, अब नाउ गवर्नमेंट उसको क्या कर रही है रीपे कर रही है. सो दैट विल बी ट्रीटेड एज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर. व्हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर? द फर्स्ट पॉइंट इज इट इज नॉन रेकरिंग इन नेचर. व्हाई इट इज नॉन रेकरिंग? अब बार बार थोड़ा ना रीपे करोगे, यू जस्ट रीपे इट वंस. वो एक वन टाइम ट्रांजेक्शन होती है. एंड द सेकेंड पॉइंट इज इट रिड्यूसेस द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. बाय द रीपेमेंट ऑफ लोन जो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी है वो क्या हो रही है रिड्यूस हो रही है. सो दैट्स व्हाई इट इज ट्रीटेड एज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर. एंड द लास्ट वन इज योर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्कूल बिल्डिंग. ओके, जब गवर्नमेंट कोई भी स्कूल बिल्डिंग क्रिएट कर रही है या फिर कंस्ट्रक्ट कर रही है, इन दैट केस वो क्या कर रही है एक एसेट क्रिएट कर रही है, राइट? उसने क्या करा एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करा है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. सो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्कूल बिल्डिंग है दैट इज ऑफ कोर्स योर नॉन रेकरिंग नेचर, क्योंकि बार बार तुम स्कूल कंस्ट्रक्ट करोगे, इट ऑलवेज अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट. एंड सिमिलरली जब आप स्कूल कंस्ट्रक्ट करते हो वो क्या कर रहा है गवर्नमेंट के लिए एसेट क्रिएट कर रहा है. सो दैट्स व्हाई कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्कूल बिल्डिंग इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर द गवर्नमेंट. सो this video, then please hit the like button and do subscribe to our channel, and please share this video on WhatsApp, Facebook, LinkedIn and Twitter. And if you have any doubt or query, you can just drop your question in the comment section, and please visit our website arinjacademy.com/class 12 economic solution for more content. Thank you.